Hello students and the viewers. Welcome you all to my channel KCC English Education. My name is GL Kaviraj. Today our topic is the complex sentence, uses of complex sentences. Earlier also you might have seen some videos, complex sentences are there. Okay, these complex sentences are based on the clauses, noun clause, adjective clause and adverb clause. Especially this video is for both academic, those who are academic students, CBSC, ICSC, IB, state boards and or any board students, they have a chapter of clauses in English grammar. Clause chapter is there. It is there six one words, 6 to 12th, up to 12th. Okay, your grammar is there, and in this you have noun clauses. These clauses are of three types: noun clause, adjective clause and adverb clause. So today our topic is noun clause. Okay, and another most important thing is those who are common spoken English students, though you intend to speak English. Okay, so you need to make the complex sentences. You don't need, especially this is whether it is noun clause, adjective clause or adverb clause, no matter. But thing is you need to make the complex sentences. Okay, how can I create the complex sentences? So if you observe this video, follow me, then you can easily understand. But most important thing is you should know tenses. Your tense concept should be clear. Then this will be easier to understand. Okay, in tense, you see, if observe the sentences written here. These sentences are I understand, then I understood, I think, I thought, you forget, you forgot. I think you got the concept. You see here, I understand, all these what, all these are called principal clauses. अगर हम इसको क्लॉज की बात करें तो कौन सी क्लॉज है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है. इट इज principal clause, main clause, independent. It doesn't, these sentences don't depend on the subordinating clause. Subordinating part पर ये depend नहीं करता. हम यहाँ पे बनाएंगे जो sentence, जो part, that is called subordinating noun clause. Okay, these 6 sentences are there. We will make subordinating noun clause sentences, and combinedly the sentence will be a complex sentence. इस sentence का नाम होता है complex sentence. प्रिंसिपल क्लॉज प्लस ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दोनों मिलाने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है. तो व्हाट इज द प्रोसेस? हाउ कैन वी मेक इट? ओके, equally as I was telling you, equally it is important for both academic students as well as for spoken student. Now see, I understand, this is which tense? Simple present tense. I understand. I is subject, understand is main verb. Okay, and it is subject verb. Object may be there, may not be there. It gives us complete sense. I understand. Thereafter, we may put a full stop over here, but we are not doing so. We are making a complex sentence. How can we make complex sentence? You see here, you observe the WS family members are written here. These are the WS family members: what, where, when, why, who, which. Other conjunctions, subordinating conjunctions like that, if. Okay, so many are there. Though, although, even though, thereafter, before, after, so many subordinating conjunctions are there. So we can use a suitable one. And what is our process? You know what is our process? How can we make a complex sentence? Here, first of all, we have to bring a conjunction. This is WS family conjunction or any subordinating conjunction. कोई भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आपको यहां पे ब्रिंग करना है. दैट इज फर्स्ट इज योर कंजंक्शन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज योर फर्स्ट थिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देन कम्स योर सब्जेक्ट, देन main verb, finite verb. What may be the, as per the tenses are concerned, you can use the forms of verbs. वो आपको टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी फॉर्म का वर्ब आप यहाँ पे यूज करोगे. प्लस ऑब्जेक्ट मे बी देयर, मे नॉट बी देयर. ये ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए. दैट इज योर एनी ऑफ द WS फैमिलीज.
कई सारे WS फैमिलीज है, इसमें वी कैन अप्लाई, यू कैन यूज इट. फॉर एग्जाम्पल द आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं या मैं समझती हूं. आप बोल रहे हो कि यस आई अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड के बाद अब जो पार्ट आप यहां पे जोड़ोगे उसमें सबसे पहले कंजंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग ए कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. मैं आई अंडरस्टैंड. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो? तो ये वी पुट ए क्वेश्चन मार्क व्हाट. हम अगर यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं अंडरस्टैंड, ठीक अंडरस्टैंड के सामने यहाँ पे हम व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं. आई अंडरस्टैंड व्हाट, मैं समझता हूं, क्या समझते हो? आई अंडरस्टैंड, तो आई पुट ए क्वेश्चन मार्क व्हाट. दिस इज द मेन थिंग. इफ वी कैन पुट ए क्वेश्चन मार्क व्हाट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. वर्ब के सामने अगर हम व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं, जो भी जवाब मिलता है, जो भी जवाब मिलता है, दैट विल बी योर सबऑर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज. मे बी a noun phrase, but we are not going to phrase now. In this videos, in this class, you will come to know the clauses, not the phrases. I am not telling now the phrases. Now I understand. What among bring a suitable conjunction here. इनमें से कोई भी एक चुनो. आई कैनॉट, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं या मैं समझते हूं. व्हाट यू सी हियर, व्हाट यू टीच. आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं. व्हाट यू टीच, हियर यू सी, ऑब्जर्व हियर. टीच इज योर फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड इज फर्स्ट फॉर्म. बोथ आर इन प्रेजेंट टेंस. Okay, I understand what you teach, and what is our subordinating conjunction plus subject. You is subject. MB, here it is MB1 teach. Object may be there, may not be there, as I told you. Okay, now I understand what you teach. So can we write any more sentence or any other tense? Can we use any other tenses? Yes, we can use. I understand what you are teaching. Present continuous. I understand what you are teaching. अब मैं समझता हूं या मैं समझती हूं आप क्या पढ़ा रहे हैं. Okay, then present continuous is possible. Present perfect. I understood. I understand. I understand what you have taught. Present perfect tense. आपने अभी अभी जो पढ़ाया, I understand. I have understood. Present perfect tense. Okay, I have understood. Present perfect tense. That is also possible in this part. Okay, I have been understanding. But mostly we don't use this, but the useful is here. Here it is simple present. You can also use here a simple present statement. Now this is conjunction, then subject, then main verb. Got it? Next comes our, see, so many possibilities are there. I understand not only what, I understand where you live. I understand why. I understand why you are learning English. I understand, मैं समझता हूं. Why, any other, not only what, you can use with why. मैं समझता हूं why you are learning English. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Okay. तो ये जो नॉट ओनली सिंगल, सो मेनी WS families are the options, possibilities are there. You can use them. You should try. Next comes your next sentence is your I understood. Follow here. Okay. As I was telling you, if your tenses are clear, then only it will be easier to understand. I understood, मैं समझ गया या समझ गई. Simple past tense. अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म आई अंडरस्टूड. ओके, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, या आप बोल रहे हो कि मैं समझ गई. व्हाट यू टीच और व्हाट यू टॉट, क्या होना चाहिए? व्हाट यू टॉट, क्योंकि यहां पे अंडरस्टूड है, पास्ट टेंस है. आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया या मैं समझ गई. व्हाट यू टॉट, जो आपने सिखाया, जो आपने पढ़ाया. व्हाट इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यू इज सब्जेक्ट एंड टॉट इज MB2. नाउ दिस इज कॉल्ड ए क्लॉज. विच क्लॉज?
इसका नाम है नाउन क्लॉज। इसको एकेडमिकली इसको क्लॉज के हिसाब से पहचाना जाता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू एज आई वाज टेलिंग यू कि आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, आपको ये जरूरी नहीं है कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, नो नेसेसरी। फॉर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू फ्रेम ए सेंटेंस, आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है एंड इट इज नेसेसरी ऑल्सो। नाउ यू सी द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे हुआ यहाँ पे, या अंडरस्टूड है, यहाँ पे टॉट है। आई अंडरस्टूड व्हाट यू टीच, ये भी पॉसिबल है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यहां पे क्या हो रहा है, आप बता रहे हो कि मैं समझ गया या समझ गई जो आपने पढ़ाया, ठीक है, तो ये आई व्हाट यू टॉट, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट इज योर आई थिंक, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूं, दैट यू आर टेलिंग आई थिंक। आई थिंक, देन व्हाट is possible, which one will be appropriate one? I think what, where, when, why, who, which one is more appropriate? That, but sometimes this that is your silent conjunction. I think that is your silent conjunction here. You see how I think you should come to the class regularly. Now I am telling you, I think, मुझे लगता है, you should come to the class regularly, not the online, you should have some offline classes. I think you should come to the class. It is what? I think you should come to the class daily. देखो, I think that you may mention, you may use, you may not use. I think silent conjunction, silent. Many times we use the subject may be silent. Imperative sentence में क्या होता है, all the subjects are silent. Come, go, you go, but we are not using you. Similarly here that is a conjunction, but here it is silent. I think you should come to the class daily. मुझे लगता है आपको रेगुलर आना चाहिए. Okay, I think you should learn English. I think, मुझे लगता है, you should learn English to get a job. So in this way you can make any of the sentences of your own. Okay, it's clear? So you should come, this is it, is what, present or future, not the past, because here it is think. Now see, this part should be in present, simple present, or should is here gives us the present sensation. You should come to the class daily, हर रोज आपको क्लास आना चाहिए, it gives us the present sensation. Okay, now I thought, here is the difference, think and thought. I thought, मैंने सोचा था, I thought. Okay, I thought that, यहाँ पे भी silent subject, silent conjunction. Think करो, what could be a possible sentence? I thought I could, I thought, आप बता रहे हो, I thought I could speak English. You are telling, okay, you are telling this sentence, I thought, मैंने सोचा था, या I thought, मैंने सोचा था, that is silent. I could, not can, I could speak English. Can का past form है could. Okay, मैं English सीख, I would or I could, remember you can use would also, सीख सकता था. Okay, इसका various uses are there. Could हमें present possibility भी या present reality भी show करता है could. Various uses of could. But here I thought I could speak English. I could speak English easily.
मैंने सोचा था कि मैं इजीली इंग्लिश सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी. I thought. Got it? Here it is past modal. You see, here it is present modal. Here it is past modal. Now next is here you see you forget. आप भूल जाते हो. Okay, you forget what you promise. You forget. आप भूल जाते हो जो आप वादा करते हो. What you promise. ये क्या है? Forget है, past present tense, first form. You forget. आप भूल जाते हो, simple present. What you promise, जो आप promise करते हो, this is also simple present. ओके, ये जरूरी है यहाँ पे लिंक करना, क्योंकि नहीं तो सेंस नहीं बनेगा. I forget what you forget what you promise. जो आप promise करते हो हमेशा always you forget it. Okay, got it? केयरफुली ऑब्जर्व करो, दोनों में मैंने दिस इज प्रेजेंट टेंस, इट इज पास्ट टेंस, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट. गॉट इट? नाउ यू फॉरगॉट. यू फॉरगॉट, आप भूल गए. व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ वर्ब हियर? ऑब्जर्व हियर. व्हाट विल बी द यू फॉरगॉट, आप भूल गए. What you promised. ये ed, ये promised, ये ज्यादा appropriate है. यहाँ पे forgot है, ये past के साथ past का combination है. You forgot, आप भूल गए जो आपने promise किया था. What you forgot. तो you see everywhere these are your subordinating. Its name is subordinating noun clause. Very very important. Okay. So subordinating noun clause पाने का एक ही तरीका है कि we have to put a question mark what in front of the principal clause. अगर हम principal clause के सामने what question put करते हैं, करके देखो सभी के सामने. I understood what. तो इसका जवाब है what you taught. I think what. मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ. what, क्या सोचते हो? That you should come to the class daily. कि आपको रोज क्लास अटेंड करना चाहिए. I thought what? That you could speak English. I could speak English easily. You forget what? क्या भूल गए आप? You forget what you promise, जो आप promise करते हो. तो ये simple present tense, present. Here it is past, here it is also past. You forgot what? So everywhere we can find out the noun clause by putting a question what in front of the principal clause. अगर हम principal clause के सामने what question put करते हैं, उसका जो भी जवाब मिलता है उसे हम या तो noun clause बना सकते हैं या तो noun phrase भी बना सकते हैं. ये सभी को हम phrase में बदल सकते हैं, convert कर सकते हैं. That is more advanced. ये बनाना तो if you follow the technique you can do it. Okay, and these are not so impressive. इसको हम impressive नहीं मानते हैं. Impressive होता है जब हम इसको phrase में convert करते हैं. Okay, so we will do it, and next will be your complex sentences with subordinating adjective clause. Okay, I think you got it. Okay, thank you.